Morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Revising the topics which we have covered in modification of 12, so that students will get the time to join, and then we will start a new modification of 12 that is known as broken 12. So far we have done 3 modifications. One is wave 12, which is producing wave defect in the fabric, and the weave reverses on a sharp point. So a sharp point is created in the fabric. That's why these 12s are also known as pointed 12s and constructed on the basis of pointed draft. And horizontal wave defects are generally preferred over vertical wave defects because of economy due to less number of hills required with the aid of pointed draft. That we have done in wave 12. Then we have taken methods of construction. Here we have taken one example. Wave 12 produce on the basis of 2 up to down 12. So we have calculated the size by following the formula, and 2n minus 2 for the EPR, and horizontal effect is produced here in 6 cross 4. First constructing draft, that is a pointed draft, constructing lifting plan, which in which we are just indicating a base 12, that is 2 up to down 12 in 4 cross 4, and we are getting this design with the help of this draft and lifting plan. Similarly, another example we have taken in 10 cross 6 on the same pattern. But there are certain designs, certain views which are having sizes in such a manner that EPR is not equal to 2n minus 2. In that case, we have to shift the point of reversal. So here we have shifted the point of reversal according to size. The point of reversal we have denoted by K, and it can be calculated just by using the same formula 2n minus 2, which we use for EPR. One disadvantage is associated with wave 12s, that long floats are formed where the weave turns, and we cannot prevent the formation of increased float or longer floats at the point of reversal, and that's why these weaves are not preferred. Then herringbone 12, which is also produced by reversing the direction of 12, but in a different manner from wave 12. Here one line said to be cut into the other line, and these are produced by following a principle at the point of reversal at just last end of the first part and first end of this next part should be exactly opposite of each other, and then we turn the direction. And if we have to construct herringbone draft, we are moving from one to last hill straight, and then next end is passing through n by 2 hilt. N by 2 hilt is opposite of nth hilt for balanced 12s. So for balanced 12s, we move straight up to the last hill frame, and then we start from the n by 2 hilt in the reverse order. In this way, we can produce herringbone draft, and regular 12 is taken as the lifting plan, and with the help of this herringbone draft and lifting plan, we can construct the weave. So directly we can construct the weave, and we can construct draft and lifting plan, or first we construct draft and lifting plan, and then we can construct the weave. Curved 12s are produced on the basis of pointed 12. So for that, we have taken a pointed draft as the base to construct a curved draft in the second step. First step is simple, base 12 is taken as the lifting plan. Second step, curved draft is constructed on the basis of pointed draft. So whatever the size is given, in that the lesser number is indicating the number of hill frames. So from that we can know n, and with the help of n, you can calculate 2n minus 2, and first you can construct a pointed draft as we have taken here in 6 hill frames. 10 is the EPR is 10, so pointed draft is taken on 10 ends and 6 hills. Then if we have to produce on 14 ends, then we will add 2 at the left side of the center and 2 at the left side of the center, 2 threads. If it is 16, then 16 minus 10, 6. So 3 at the left side and 3 at the right side of the center, that is 6. If it is 18 cross 6, then we will 18 minus 10, that is 8.
So 4 more threads will be added at the left side of the center and 4 threads at the right side of the center. In that way, we are producing symmetrical curved effects. This is example given in 16x6 on the basis of 3 up, 3 down 12. So this is producing curve effect in the fabric. Assignments, if I have changed, then please note down. Construct a curve twill in 24/8 and construct a curve twill in 4x10. The next view we are going to start in the modification of twill is broken twill, and which is a most widely used twill. And sometimes the effects may resemble with the herringbone twills. So you can say herringbone is one type of broken twill. Broken twill can be taken as a wider term, and herringbone twill, sometimes some effects of broken twill may be similar as herringbone twill. So you can say herringbone twill may be the part of broken twill. And as the name suggests, this twill, a large variety of effects can be produced by breaking a regular twill, and such effects are known as broken twills. What we are doing, we are breaking the regular twill at certain intervals. And by breaking the regular twill at certain intervals, we can produce a variety of designs, a variety of effects, and such designs are known as broken twills. This break can be done in 2 ways, either by reversing the direction of twill or by entering and skipping the threads of an ordinary twill. So we are using 2 methods to break the continuity of the twill, and by breaking this continuity of the regular twill, we can produce broken twills. So we can say broken twills can be produced by these 2 methods, either reversing method or entering and skipping method. We will see few examples on the basis of reversing method and few examples on the basis of entering and skipping method. So first, broken twill by reversing the direction of twill by reversing method. So in this method, the broken twill is constructed by stopping the orderly progression of the regular twill at frequent intervals. As you know, regular twill is progressing in a straight order, first to last heel frame. So we are taking a diagonal line from one corner to another corner. But what we are doing, we are stopping this orderly progression. ये जो orderly progression है, ये order में straight order में जो बढ़ रही है twill, इसको हम किसी भी interval पे, किसी भी particular number of thread पे हम उसको break कर देते हैं, उसको stop कर देते हैं, and then running the twill in reverse order. जहाँ भी हमने break किया है, उसके बाद हम उसको reverse order में run करते हैं twill को. So in this way, by reversing the direction of twill, we can produce variety of broken twills. So here the construction part, in construction part, the most important thing is the size. To decide the size is an important thing in the modifications of twills. So here size depends on B and N. What is B? B is the breaking unit. कितने threads के बाद हम उसको break कर रहे हैं? After 2 threads, 3 threads, 4 threads, 5 threads, 6 threads, कितने threads के बाद, जितने threads के बाद हम उसको break कर रहे हैं, वो एक breaking unit बन जाता है, वो एक group बन जाता है, उसको हम breaking unit बोलते हैं. And N is the number of threads in regular twill. Number of threads in the regular twill means number of ends, number of picks, and number of hills also same in the regular twill. Yeah, in all the regular twills, EPR equal to PPR equal to number of hills. So N is the number of, you can say number of the hills in the regular twill. So N is number of threads in the regular twill, and B is the breaking unit. So there may be different cases. Mainly there are 2 cases. If the breaking unit is factor of N, ये जो breaking unit जो हम ले रहे हैं, वो अगर N जो number of threads regular twill में है, उसका factor है, तो the size will remain same as the regular twill. Regular twill का size क्या होता है? N into N, EPR is N, PPR is N. So the size of the broken twill will remain also same, that is N cross. अगर breaking unit B जो है वो N का factor है. For example, you're taking size 8 cross 8 for regular twill, and you are taking a breaking unit 2.
So 2 is factor of n. Then size of the broken twill will be 8 cross 8. If you are taking 4, then 4 is factor of n, this 8. So the size will remain same, that is 8 cross 8. So broken twill will be constructed in 8 cross 8. But if B is not a factor of n, अगर ये breaking unit n का factor नहीं है, तो आप क्या करेंगे? Then we will calculate EPR by taking LCM of breaking unit and number of threads in the regular twill. B और N का अगर हम LCM लेंगे, तो we will be able to finalize or to decide the ends per repeat, and picks per repeat will be N, and this is for horizontal effects. If you are taking vertical effects, if you have to construct vertical effects, then just reverse will be the case. EPR will be N and PPR will be LCM of B and N. So that in every case, in every modification of twill, we are calculating sizes for horizontal effects, because horizontal effects are preferred over vertical effects, and they are more widely used in the industry. So I'm taking all the examples related with horizontal effects. The vertical effect means tilting the same effect on 90 degree. So your PPR will become EPR and EPR will become PPR. Just a reverse of the reverse case of horizontal effect. So remember this: if B is the factor of n, size will be n cross n, and if B is not a factor of n, then the EPR will be calculated by taking LCM of B and N, and PPR will be equal to N. So method of construction involves 3 stages or 3 steps. First step is construct broken draft. सबसे पहले आपको ड्राफ्ट बनाना है, और वो यहाँ पर हम ब्रोकन ड्राफ्ट बनाएंगे टू प्रोड्यूस अ ब्रोकन ट्विल. ब्रोकन ड्राफ्ट बनाने के लिए अगेन हमने 3 स्टेप्स ली हैं, हाउ द ब्रोकन ड्राफ्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड. तो ब्रोकन ड्राफ्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेट करेंगे स्ट्रेट ड्राफ्ट. इंडिकेट स्ट्रेट ड्राफ्ट इन गिवन हिल्स एंड रिक्वायर्ड एंड्स. जो भी एंड्स पर रिपीट व्यू में है वो, और जितनी हिल फ्रेम्स जो बेस ट्विल दिया हुआ उससे आपको हिल फ्रेम्स मालूम पड़ जाएगी. तो जितना जो हिल्स हैं और रिक्वायर्ड एंड्स हैं उसमें हम सबसे पहले स्ट्रेट ड्राफ्ट इंडिकेट करेंगे. तो हमने पहले साइज कैलकुलेट कर लिया है, तो आपको EPR पता है, नंबर ऑफ हिल्स पता है. तो इन दैट फर्स्ट इंडिकेट अ स्ट्रेट ड्राफ्ट. सबसे पहले आपको स्ट्रेट ड्राफ्ट बनाना है, एंड वी आर यूजिंग नंबर्स मेथड फर्स्ट हियर, ताकि अब पहले नंबर्स मेथड में बना लेंगे ब्रोकन ड्राफ्ट, and then we will convert into graph paper method. So first indicate straight draft in given hills and required ends. Then second step, make groups according to B. जो आपने ड्राफ्ट बना लिया है उसमें ब्रेकिंग यूनिट के अकॉर्डिंग आप उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, ग्रुप्स बना लें उसके अकॉर्डिंग टू ब्रेकिंग यूनिट. एंड देन कंस्ट्रक्ट ब्रोकन ड्राफ्ट बाय रिवर्सिंग ऑल्टरनेट ग्रुप्स. फिर आपको ब्रोकन ड्राफ्ट बनाना है. जो ग्रुप्स आपने बना लिए हैं स्ट्रेट ड्राफ्ट के अंदर, उनमें उनको ऑल्टरनेट रिवर्स करते हुए, यानी कि फर्स्ट ग्रुप को स्ट्रेट रखेंगे, सेकंड ग्रुप को रिवर्स करेंगे, फिर थर्ड को स्ट्रेट रखेंगे, फिर फोर्थ को रिवर्स करेंगे. वन ऑल्टरनेटली स्ट्रेट रिवर्स, स्ट्रेट रिवर्स, स्ट्रेट रिवर्स. बाय टेकिंग दिस ऑर्डर वी कैन प्रोड्यूस ब्रोकन ड्राफ्ट. सो वी विल अंडरस्टैंड दीज स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ मेनी एग्जांपल्स. इस तरह से हमने ब्रोकन ड्राफ्ट बना लिया फर्स्ट स्टेप में. सेकंड स्टेप इज इंडिकेट बेस ट्विल एज लिफ्टिंग प्लान. यहाँ 4 अप 4 डाउन नहीं करना है, ये मैंने एग्जांपल लिया इसलिए वहां से 4 अप 4 डाउन आ गया. इंडिकेट बेस ट्विल एज लिफ्टिंग प्लान. बेस ट्विल कुछ भी हो सकती है, 2 अप 2 डाउन, 3 अप 3 डाउन, 4 अप 4 डाउन, इसलिए यहाँ पर 4 अप 4 डाउन नहीं होना चाहिए. इंडिकेट बेस ट्विल एज लिफ्टिंग प्लान. एंड थर्ड, देन कंस्ट्रक्ट व्यू फ्रॉम अबव ड्राफ्ट एंड लिफ्टिंग प्लान. जो आपने फर्स्ट स्टेप में ड्राफ्ट बनाया ब्रोकन ड्राफ्ट, और सेकंड स्टेप में जो लिफ्टिंग प्लान बनाया, इन दोनों की हेल्प से वी कंस्ट्रक्ट द व्यू. सो इन दिस वे वी कैन कंस्ट्रक्ट ब्रोकन ट्विल बाय रिवर्सिंग मेथड. So here we are taking some examples, construction of broken draft first. So example we are taking, that is 4 up 4 down twill. जो base twill ले रहे हैं, original twill जो regular twill हम ले रहे हैं as a base, suppose that is 4 up 4 down twill. So 4 up 4 down is constructed in 8 cross 8, 4 plus 4, 8 cross 8, and number of hills required is also 8. So all these informations we are getting from the twill itself. Now there may be different breaking units.
ब्रेकिंग यूनिट में भी 2 और 3 और 4 और एनी अदर नंबर लेस देन n, n से कोई भी एक नंबर कम होना चाहिए, that can be taken as breaking unit. So you can take 2, 3, 4, 5, 6, 7, up to 7 you can go. But generally we are taking the breaking unit either half or less than half of the n. तो n by 2 यहाँ पर 4 हो रहा है, तो 4 लेंगे या 3 लेंगे या 2 लेंगे. So here हमने पहले सबसे पहले हमें बेस ट्विल हमें पता है और ब्रेकिंग यूनिट अगर हमें पता है तो वी कैन डिसाइड द साइज. फॉर एग्जांपल इफ वी आर टेकिंग ब्रेकिंग यूनिट इक्वल टू 4, पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं ब्रेकिंग यूनिट इक्वल टू 4 और जो आपका n है दैट इज 8. सो दिस b इज फैक्टर ऑफ n. तो साइज क्या होगा ब्रोकन ट्विल का? सेम एज रेगुलर ट्विल, n क्रॉस n. 8 cross 8 will be the size. In this way, first we decide the size according to n and b. What b we are selecting. 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग. और यहाँ पर बेस ट्विल क्या ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम पहले v जो ब्रोकन ट्विल हमें बनाना है उसका साइज डिसाइड करेंगे. और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, if b is factor of n, size of the broken twill will be n cross n. Please mute yourself. किसी का माइक अनम्यूटेड है. राम प्रताप. So 8 cross 8 साइज कैसा है समझ में आया आपको? n cross n, because b is factor of n. जो 4 है वो 8 का फैक्टर है, इसलिए साइज will be n cross n for broken twill. अब इसके लिए हमें पहले स्ट्रेट ड्राफ्ट बनाना है. तो एंड्स पर रिपीट आपको पता है 8 है, नंबर ऑफ हिल्स भी 8 है. तो स्ट्रेट ड्राफ्ट क्या बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ends per repeat. So straight drafts will be indicated like this, 1 to 8 straight. Second step है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोकन ड्राफ्ट की सेकंड स्टेप क्या है? हमें ग्रुप्स बनाने हैं. और क्योंकि ग्रुप विल बी इक्वल टू, ग्रुप साइज विल बी इक्वल टू बी. बी आपने 4 लिया है, तो अब इसको हमें 4 4 के 2 ग्रुप बनेंगे. यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एक ग्रुप में हो गया और 5, 6, 7, 8 अनदर ग्रुप हो गया. ग्रुप साइज विल बी इक्वल टू ब्रेकिंग यूनिट. तो ग्रुप साइज यहाँ पे 4 है, तो हमने इसको 4 4 के 2 ग्रुप बना लिए. एंड नाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट ब्रोकन ड्राफ्ट बाय रिवर्सिंग ऑल्टरनेट ग्रुप्स. तो पहले को स्ट्रेट रखना है, 1, 2, 3, 4 स्ट्रेट, और इसको रिवर्स करना है. रिवर्स मीन्स 5, 6, 7, 8 विल बिकम 8, 7, 6, 5. रिवर्स कर देना इसको 8, 7, 6, 5. And this new drafting order 1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5, which is repeating in 8 ends per repeat, is known as broken draft. So this will be a broken draft if n is 8 and breaking unit is 2. Breaking unit is 4. Clear? To understand it, take one more example. Suppose b equal to 2. Breaking unit हम 4 के बजाय 2 ले रहे हैं. 2 is also factor of 8. So size of the broken twill will be same, n cross n, 8 cross 8. Straight draft क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसी को हम ग्रुप में डिवाइड कर देंगे और यहाँ ग्रुप साइज 2 है. ग्रुप साइज इज इक्वल टू ब्रेकिंग यूनिट 2. तो 2 2 के ग्रुप्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ends per repeat. And broken draft can be constructed by taking one straight, one reverse, one straight, one reverse. So one straight is 1, 2 is straight. 3, 4 को रिवर्स करना है, तो 3, 4 विल रिवर्स होने के बाद क्या होगा? 4, 3, 5, 6 स्ट्रेट रहेगा एंड 7, 8 विल रिवर्स 8, 7. यहाँ 2 ही ग्रुप थे इसलिए हमने एक को स्ट्रेट एक को रिवर्स किया था. यहाँ पे हमारे पास 4 ग्रुप हो गए, इसलिए फर्स्ट स्ट्रेट, सेकंड रिवर्स, फर्स्ट थर्ड स्ट्रेट एंड फोर्थ रिवर्स. You will get a broken draft 1, 2, 4, 3, 5, 6, 8, 7. Sorry, it is incorrect. It should not 7, 8. It should be 8, 7. So correct it. 1, 2, 4, 3, 5, 6, 8, 7. In this way, your broken draft will be constructed with breaking unit 2 if n is 8. One more example. If suppose breaking unit is 3 and n is 8.
Now, because breaking unit B is not factor of n, so EPR will be LCM of B and n. So 3 और 8 का LCM लेंगे, that will be 24. So size EPR will be 24 and PPR will be equal to n, that is 8. So the size for the broken twill will be 24 cross 8 if breaking unit is 3 and n is 8. Is it clear? Because B is not factor of n, and if B is not factor of n, size will be calculated by taking LCM of B and n. So LCM of 3 and n, 3 and 8 is 24. So EPR is 24 and PPR is 8 for horizontal effects. For vertical effects, it will become 8 cross 24. Now first step is straight draft. तो आपको स्ट्रेट ड्राफ्ट बनाना है 24 एंड्स में और 8 हिल्स में. हिल्स आपकी 80 हैं, एंड्स 24 हैं, हिल्स 80 हैं, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन 4 of 4 down 12. तो यहाँ पर क्या होगा, 24 में 8 हिल्स कितनी बार रिपीट होगी, ये ड्राफ्ट कितनी बार रिपीट होगा, 3 times. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 time, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 time, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 time. So 8 into this 8 into 3, 24 ends per repeat will be there. So in this way we are taking straight draft, but 3 repeats of straight draft to make it 24. 8 को 24 बनाने के लिए हमने 3 repeats लिया इसका. Now according to second step, make the groups of 3, क्योंकि ब्रेकिंग यूनिट 3 का है तो 3 के ग्रुप बनाने. तो 1 2 3 1 ग्रुप, 4 5 6 another group, 7 8 1 next, 2 3 4 5 6 7 8 1 2. आप देखिए सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8, then 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. स्ट्रेट ड्राफ्ट को ही ग्रुप्स में अलग अलग करके हमने यहाँ पे लिखा है 24 ends per repeat. And now it can be converted into broken draft by taking first straight, then second reverse, then again straight, reverse, alternately straight, reverse. So 1 2 3 straight, this will be reverse, 4 5 6 6, it will become 6 5 4. Again 7 8 1 straight, 4 3 2 reverse, 5 6 7 straight, 8 1 2 8 1, sorry, 5 6 7 straight and 2 1 8 reverse. Then 3 4 5 straight and 8 7 6 reverse. In this way we will get a broken draft in 24 ends per repeat and 8 hill frames. By indicating this broken draft on graph paper and by taking 8 cross 8 for a 4 down twill as a lifting plan, you can construct the design in 24 cross 8. That will be a broken twill in 24 by 8. And these examples are taken later on. First, I have taken the example with this for a 4 down twill with breaking unit 4, this one. So it will be constructed in 8 cross 8. So you can see I've taken a size 8 cross 8 for draft, 8 cross 8 for design and 8 cross 8 for lifting plan. मैंने दो डिजाइन साथ में ले लिया है, दोनों का लिफ्टिंग प्लान कॉमन है इसलिए मैंने दोनों डिजाइन साथ में ले लिया. दिस इज 8 cross 8 डिजाइन, दिस इज ऑल्सो 8 cross 8 डिजाइन, this is 8 cross 8 draft, this is 8 cross 8 second draft, and this is common lifting plan for both. So here I am taking 4 of 4 down twill as the lifting plan. You can see a 4 of 4 down twill is indicated here as a lifting plan. By taking 4 of 4 down and advancing by 1, I have indicated a 4 of 4 down twill in 8 cross 8. And that will serve as a lifting plan for broken twill. That will be serve as a base for the broken twill. So ये बेस हमने ले लिया यहाँ पे ओरिजिनल ट्विल 4 up 4 down in 8 cross 8. This is breaking unit 4. तो breaking unit 4 में हमें ड्राफ्ट क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 को रिवर्स किया था हमने. तो 1 2 3 4 स्ट्रेट and 5 6 7 8 को हमने रिवर्स किया तो 8 7 6 5 were the broken draft in numbers method, and we have converted that into graph paper method. So by taking this as a draft, this as a lifting plan, construct a design, you will get a broken twill in 8 cross 8 like this. And if breaking unit is 2, then 1 2 straight, 3 4 को रिवर्स करेंगे, 4 3 बन जाएगा, 5 6 स्ट्रेट, ब्रेकिंग यूनिट 2 का है 2 का है इसलिए दो नंबर्स ले रहे हैं हम, 5 6 स्ट्रेट एंड 8 7 रिवर्स, 7 8 रिवर्स होगा. स्ट्रेट ड्राफ्ट क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8.
तो 2 2 का ग्रुप है तो 1 2 स्ट्रेट, 3 4 रिवर्स होगा तो 4 3, 5 6 स्ट्रेट, 8 7 7 8 रिवर्स होगा तो 8 7। तो नंबर्स मेथड नहीं लेकर के भी आप डायरेक्टली ग्राफ पेपर में भी बना सकते हैं अगर आपको कन्वीनियंट है तो। बट instead of making mistake, it is better first if you are comfortable with first numbers method and then convert it into graph paper method, then go for that. Hardly it will take 1 or 2 minutes extra, but chances of mistakes will be less. But if it is comfortable to you and after practice you become comfortable, so you can use this method also directly on the graph paper. So by taking this as a draft, this as a lifting plan, you can construct the design. That will be a 4 of this broken twill in 8 cross 8 based on 4 of 4 down twill. So this is these two examples we have taken. The third example is 24 by 8. So design size is 24 cross 8, 24 ends and 8 picks. Draft will be indicated in 24 by 8, 24 ends and 8 hill frames. And lifting plan will be indicated in 8 cross 8. And the base twill for a 4 down is indicated here as the lifting plan. And then we have to indicate a draft here by taking 1 straight, 1 reverse. Because braking unit is 3. So 3 straight, 3 reverse, then 3 straight, 3 reverse, 3 straight, 3 reverse. This is 1, 2, and 3 reverse. 3 straight and 3 reverse. Like this, you can construct a draft. ये डायरेक्टली बनाना मुश्किल हो तो पहले आप नंबर्स मेथड में बना लें और नंबर्स मेथड को इसमें कन्वर्ट कर लें. And here is by taking this as a draft, this as a lifting plan, you can construct the design. Okay, so if base twill is given, how to calculate the size of broken twill, that I have shown to you with 3 examples in 4 of 4 down twill. But suppose in some examination, sometimes it is given construct a broken twill in 8 cross 8 or 24 cross 8. Then अगर size given है तो आपको क्या करना होगा? You have to go reverse. आपको पता है 24 cross 8 दे रखा है या 8 cross 8 दे रखा है. It means number of hills will be 8. The base twill will be constructed in 8 cross 8. So you have to go for, if you are going for balanced twill, and generally we prefer balanced twill, and it is also easy. So avoid, it is better to construct with the easier things, easier twill. So take a 4 of 4 down twill because it is 8, repeating in 8 cross 8 and balanced twill. So 4 of 4 down twill will be the base twill. So 4 of 4 down लेकर के आप lifting plan बना सकते हैं. इस तरह से आपको base twill मिलेगा. एंड ब्रेकिंग यूनिट क्या लेना, दैट विल डिपेंड ऑन ईपीआर. अगर ईपीआर 8 है, इसका मतलब आपका जो ब्रेकिंग यूनिट है वो n का फैक्टर होना चाहिए. n यहाँ पर 8 है तो n का फैक्टर या तो हम 2 ले सकते हैं या हम 4 ले सकते हैं. तो 4 या 2 लेके बनाएंगे तो आपको ये वाला डिजाइन मिलेगा, या तो ये या ये, दोनों करेक्ट है. अगर ब्रेकिंग यूनिट मेंशन नहीं है तो दोनों में से कोई भी बना सकते हैं. और अगर 24 by 8 दिया हुआ है, इसका मतलब ब्रेकिंग यूनिट आपको ऐसा लेना पड़ेगा जिसका n के साथ अगर एलसीएम करें तो 24 आए. तो उसके लिए आपको या तो 3 लेना पड़ेगा या फिर 6 लेना पड़ेगा. तो ब्रेकिंग यूनिट यू हैव टू सेलेक्ट आइदर 3 और 6, बट जनरली वी प्रीफर लेसर देन n/2. तो आप 3 लेकर के इसको बना सकते हैं. इन दिस वे यू कैन कंस्ट्रक्ट ब्रोकन ट्विल्स इफ द बेस ट्विल इज गिवन और if the size is given. जो भी दिया हुआ, दोनों मेथड, दोनों मैंने आपको दोनों केसेस आपको सब एक्सप्लेन कर दिए. So you can construct broken twills accordingly. One more method is there, that broken twill by entering and skipping the threads of an ordinary twill. In this case, we are not reversing, we are entering and skipping threads of ordinary twill. So here we are taking one example in which we are entering a number of threads. We are entering number of threads that equal to n/2, and we are skipping the threads equal to n/2 minus 1. That is one case we are taking. We will take another case also, but first we are taking enter n/2 and skip n/2 minus 1. मतलब उससे जो एंटर किया उससे एक कम, और एंटर कितना कर रहे हैं, जो n है उसका हाफ. So entering half the number of n and skipping one less than that.
So if we are taking this case, then size will be calculated by taking n square by 2. EPR will be equal to n square by 2 and PPR will be n if horizontal effect has to be produced. और अगर vertical effect बनाना है तो EPR will be n and PPR will be n square by 2. So here I am taking horizontal effect, and for example I am taking 3 up 3 down twill as the base, which is repeating in 6 cross 6 and n will be 6. So EPR will be n square, so 6 square divided by 2, that is 6 square means 36 divided by 2, EPR will be equal to 18, and PPR equal to n, n is 6, so PPR will be equal to n equal to 6. So the size required for broken twill will be 18 cross 6. So in this way, first we calculate the size of the broken twill, that is here 18 cross 6 for this example, and enter is n by 2. So n is 6 divided by 2. The number of threads which we have to enter is 3, and number of threads which we have to skip is n by 2 minus 1, that is 3 minus 1. इसमें से एक माइनस कर देंगे, it will be 2. So enter 3, skip 2, size 18 cross 6, and number of hills is 6, and weave is 3 up 3 down. So by taking this example, we can construct a design here. So it is broken twill based on 3 up 3 down twill. Size is 18 cross 6, which we have calculated in the previous slide. Entering number is 3 and skipping number is 2. So how we have to how we will construct it? And for this, first we construct lifting plan and draft, and then we construct the design. So lifting plan will be constructed in 6 cross 6 by taking 3 up 3 down twill. So here 3 up 3 down and advancing by 1, or you can use diagonal method and can add the remaining marks, and you can construct a 3 up 3 down twill in 6 cross 6, and that will serve as a lifting plan. Now draft. So take a size 18 cross 6 for draft and 18 cross 6 for design. Then draft will be constructed first in this manner. So we will start the draft. We generally start the draft from first end and first hill. So start from first end and first hill frame from this square and indicate 1 mark. So this will be the starting mark of entering. So enter, we have to enter 3. So we are entering 1, 2, and 3. Enter 3. So enter 3 means 1, 2, 3. 3 numbers will be entered in a sequence, in a straight order. And now skip 2. Skip 2 का मतलब आपको जो नेक्स्ट मार्क है वो 4th पे नहीं आकर के 2 स्किप करके आएगा. 3rd के बाद आप 4 छोड़ेंगे और 5 छोड़ेंगे. नेक्स्ट एंड पे आ जाएं और नेक्स्ट एंड पे मार्क 4 पे नहीं इंडिकेट करेंगे हम. 4 को भी स्किप करेंगे और 5 को भी स्किप करेंगे, यानी कि 2 नंबर स्किप करेंगे 4 और 5, और फिर हम 6 पर एंटर करेंगे. फिर 6 पर अगर हमने एंटरिंग स्टार्ट कर दिया है तो 6 विल बिकम फर्स्ट मार्क, और 6 के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट टू 6 क्या नंबर आएगा, क्योंकि 6 हिल फ्रेम्स है हमारे पास, तो 6 के बाद नेक्स्ट नंबर होगा. सो 1 एंड 2, ये अगेन 3 हो गया. आप देखिए ये 1, 2, 3, हमने 2 स्किप किया तो 6 आया. 6 पर हमने एंटर कर दिया, ये पहला मार्क बन गया, एंटरिंग का पहला मार्क है. और एंटरिंग कितना करना हमें, 3. तो 1 और नेक्स्ट यहाँ पे 2 और नेक्स्ट यहाँ पे 3 एंटर्ड, 3 एंटर्ड, 2 स्किप, 3 एंटर्ड, अगेन 2 स्किप ऑन नेक्स्ट थ्रेड. नेक्स्ट थ्रेड के ऊपर वापस 2 स्किप करना है. ये सेकंड हिल फ्रेम पर एंड हुआ है, तो हम 3rd और 4th को स्किप करेंगे और 5th से स्टार्ट करेंगे. 5 के बाद 5 फर्स्ट नंबर होगा, 6 सेकंड नंबर होगा, और 6 के बाद अगेन 1 आएगा, 3rd नंबर होगा. तो 3 एंटर्ड हो गया. अगेन यहाँ पे 2 स्किप करना, तो 1 के बाद 2 एंड 3 को स्किप करके नेक्स्ट मार्क होगा 4. फिर अगेन 3 एंटर करना, तो 4, 5, 6, 3 एंटर्ड. अब यहाँ पर 6 के बाद अगेन हमें 2 स्किप करना है. 2 स्किप करने वाला 6 के बाद क्या था, 1 और 2. तो 1 और 2 को स्किप किया. नेक्स्ट विल स्टार्ट विथ 3 एंड 3 एंटर मीन्स 3, 4, 5. अगेन 2 स्किप करना है, तो 6 को स्किप करेंगे और 1 को स्किप करेंगे. 2 स्किप हो जाएगा नेक्स्ट थ्रेड में, और 1 के बाद आएगा 2, 3, 4 एंटर्ड. और चेकिंग क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं वापस. अगेन 2 का स्किप करें, 4 के बाद 2 स्किप करें, तो 5 और 6 अगर आप स्किप करते हैं तो नेक्स्ट विल बी 1, एंड हियर इट इज 1, 1, 2, 3. अगेन वापस आपका जो ये ड्राफ्ट है यहीं से स्टार्ट हो जाएगा. इट मीन्स नेक्स्ट रिपीट में ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे आना है. इसका मतलब आपने करेक्ट ड्राफ्ट बनाया है.
So by taking this as a broken draft, this broken draft as a draft, and this 3 up 3 down twill as a lifting plan, you can construct a design. And this design will be a broken twill in 18x6. Construction of view or design from draft and lifting plan already we have understood with many examples. So I'm not taking the construction of view from draft and lifting plan. Now onwards, you have to complete the view by taking this draft and lifting plan, and then only you will be able to understand. So we have very less time. One more example is remaining.